Hello everyone, welcome back to your Super 20 Institutes, and I'm here again to teach of physics. Okay, now let's come to the point. So today we will start our new topic. So before starting our new topic, we will see some basic problems which is related to your previous lectures. So what we have done in our previous lectures. So in our previous lecture we have done what is the meaning of the electric field lines here and what are its directions and the different pictures of the electric field lines for the negative charge as well as the positive charge also, and we will have also seen some basic properties of the electric field lines here. I think we have done the 14-15 points of your electric field lines and characteristics of your electric field lines. I hope आप सभी को समझ में आ गया है. I think you have revised your topic up to this. So today we will do some practical examples or some questions which is that is in your IIT and JEE main questions are there. So I will tell you and we will solve it here so that it is clear to all of you how the properties or characteristics are used in your questions also. Yeah. So these questions are just 1 or 2 marks questions are there like MCQs questions, and you have to choose the correct one options from here. Okay, now let's start the new topic. Before starting new topic, we will do some basic questions or examples here. So I will write down questions here, firstly questions, which is based on your electric field lines here. And yesterday I have told to you that is electric field lines are the imaginary lines, and they will start from the negative charge and terminated at they will start from the positive charge and terminated at the negative charge. मीन्स इनकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से ये स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज से ये क्या होती है, स्टॉप होती है. सो अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया है जो आपके पास 2015 में एन IIT एंड JEE में आपके पास क्या था, क्वेश्चन था. तो यू हैव टू चूज द करेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम द हियर. Okay, now you can see you will draw the different kind of the pictures from here. That is एक आपके पास क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है. I will draw the 4 options here and now you have to think and you have to choose the correct one. Yeah. So firstly you can draw the different pictures. Draw along with me. Yeah. Here is positive charges and here is negative charge. Is it clear? This is your first option. And here the electric field lines are given looks like this. इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दी हुई हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स. यू कैन ड्रॉ बाय योरसेल्फ. यस इट इज लाइक दिस. ऐसे कुछ लाइंस आपके पास क्या दी हुई हैं एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम हियर लाइक दिस वन. या एंड फर्दर आपके पास क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो है फील्ड लाइंस यहाँ से जनरेट होंगी. या at the edge. And similarly here. Okay. अपर पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज है, लोअर पोर्शन में नेगेटिव चार्ज है, और इस तरह से आपके पास क्या है, फिगर नंबर 1 दी हुई है. सो सेकंड फिगर्स यू हैव टू मेक. दिस इज योर A options and this is your second B option. B option is look like. I will draw it here so that it is clear to all of you. This is your second option. एंड इसमें कुछ लाइंस हैं आपके पास लाइक ऐसे. इसमें कुछ ऐसे दी हुई है. Then draw your diagram on your notebook in a neat and clean way so that you can easily understand what is the meaning of this. Yeah. So now the third option is there. This is A and B and this is your C. C portion में आपने कैसा डायग्राम बनाना है, something like it's circle again and central line will remain the same as well as positive charges are there and negative charges are there here. And here are the electric field lines are like this one. Here this is your C options and this one is your D options. D options में आपको क्या करना है, is like
circle, again equal number of positive charges and negative charges. Clear? And it look like this. We are doing here six charges. Draw it on your notebooks. Okay. Now you have to tell me which one is the correct option. Who will tell me that is which one is the correct option? सभी में मैंने six charges place कर दी हैं. अब देखिए four options are given here. Clear? And half is the positive charges and half are the negative charges are given also. If we will see the first options are there. We also know that electric field lines जो positive charge से generate होती हैं negative पे terminate हो जाती हैं. ये भी डायग्राम क्लियर है. बट यहाँ पे हमें नहीं पता जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ जा रही है. क्लियर? और यहाँ पे क्या है सिक्स नंबर ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बहुत ज्यादा है. और सेकंड थिंग्स है ये जो है आपके पास सेकंड फिगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल तो रही है बट वो एंड ही नहीं हो रही है. ये आपस में अटैच ही नहीं हो रही है. ये क्या है फ्रीली मूव कर रही है. तो हमें नहीं पता ये नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कहाँ से आ रही है और पॉजिटिव चार्ज वाली कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है और कहाँ पे जा रही है. डायरेक्शन इज गिवन हियर बट इट इज नॉट क्लियर कि ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही है या आपस में मैच हो रही है या आपस में क्लोज हो रही है या नहीं हो रही है. दैट मीन्स ये ऑप्शन भी आपके पास गलत हो गया. ये ऑप्शन भी आपके पास गलत हो गया. नाउ द सी ऑप्शन इज आल्सो देयर. हियर इज सिक्स चार्जेस एंड सिक्स चार्जेस आर देयर बट यहाँ पे थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जनरेट की हुई है बट वो पॉजिटिव नेगेटिव एंड पे जाके वहां पे क्या उसके साथ मीट नहीं कर रही है. ये ऑप्शन भी आपके पास क्या हो गया टोटली रॉन्ग. नाउ द ऑप्शन नंबर डी इज हियर. जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं उतनी आपके पास क्या है क्लोज्ड लाइन बना रही है क्लोज्ड लूप बना रही है. पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट नेगेटिव चार्ज के साथ जा रही है. ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हियर पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव हियर. दैट मींस आपके पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी दिस वन क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट द नेगेटिव चार्जेस. चारों ऑप्शंस में ये बात तो क्लियरली बताई गई है व्हिच इज करेक्ट दैट इज द पॉजिटिव चार्जेस जो है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जनरेट होती है बट वो कहाँ पे जा रही है कहाँ पे कैसे टर्मिनेट हो रही है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है. तो आपने क्या करना है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत ही अपनी सारी प्रॉपर्टीज को अपनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इसके साथ कंपेयर करना है और उसके बाद आपने इसमें से क्या करनी है राइट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आपके IIT और JEE के क्वेश्चन आए हुए हैं. क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट वन इज देयर. आप 221 का क्वेश्चन ले लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो आपके पास आया था 2021 में. सो 2021 में आपके पास क्या था कि थ्री इक्वल चार्जेस दिए हुए हैं दैट इज द यूनिफॉर्म चार्जेस आर देयर. थ्री पॉजिटिव चार्जेस दिए हुए हैं प्लस क्यू और आपके पास क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली हुई है और उसके ऊपर उसको क्या किया हुआ है स्प्रेड किया हुआ है प्लेस किया हुआ है. क्लियर? जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है हियर इज प्लस क्यू एंड हियर इज प्लस क्यू एंड अगेन इज प्लस क्यू. अब इसकी क्या है आपके पास अगेन फोर ऑप्शंस दी हुई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. उन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको which one is the correct option. Is it clear? So firstly I will draw the different kinds of the electric field lines here. You have to choose from here which one is the correct option. आपने अपने माइंड में सोचना है अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे कंपेयर करना है और उसके बाद आपने इसमें से क्या करना है राइट ऑप्शन को चूज करना है. ओके नाउ यू ऑल विल ड्रॉ अलॉन्ग विद बी. फर्स्ट ऑप्शन इज अब थोड़ा सा स्मॉल करके डायग्राम बनाऊंगी सो दैट कि हमारी जो स्पेस है ब्लैक बोर्ड की वो कवर अप हो सके. इज इट क्लियर? कुछ ऐसे है डायग्राम. यस यू शुड ड्रॉ. प्लस क्यू चार्जेस आर प्लेस्ड एट एवरी पॉइंट. क्लियर? सो ए बी सी जो आपके पास ऑप्शंस है वो दी है. ये फर्स्ट ऑप्शन है. सेकेंड है बी ऑप्शन कुछ इस तरह से. बी ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है सेंटर में एक सर्कल थ्री डॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पे और सेंटर में एक सर्कल दिया हुआ है और सेकेंड थिंग्स आपके पास क्या है कि यहाँ पे कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ऐसे जनरेट हो रही है एंड इट इज लुक लाइक दिस. ये आपके पास A, B and C पॉइंट है. Here you will write A, B and C also. Clear?
सेकेंड ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से की हुई है. थर्ड ऑप्शन नाउ यू हैव टू मेक. I will rub this one so that I will make the four options here of your second question, and you have to make it in your book along with me. Now you should make the third option here. C option. Yeah. C options again. The 3 points are given here. It is like this. एंड फर्दर आपके पास क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से जनरेट हो रही हैं ऐसे कुछ. क्लियर. एंड सिमिलरली फ्रॉम हियर लाइक दिस. अपनी अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिए. यस. क्लियर. तो आपके पास क्या अगेन यहाँ पे ए बी एंड सी ऑप्शन दिए हुए. नाउ यू शुड मेक द फोर्थ नंबर ऑप्शन. फोर्थ नंबर ऑप्शन इज गिवन लाइक dot here, circle circle circle, dot circle circle, and dot circle circle here. A B C and options here और साथ में ये बनाया हुआ है. Now you have to choose which one is the correct options here. So first of all you should compare your first A options. That is कि positive charges तीनों points पे spread हो रखे हैं. That means जो positive charges है close loop तो बनाएंगे नहीं. That means first option is already wrong. तो आपके पास गलत हो गया. सेकेंड है आपके पास बी ऑप्शन. बी ऑप्शन है ये सेंटर में से चार्ज कहाँ से आ रहा है, ये आपस में तो मीट करेंगे ही नहीं. तो ये आपके पास क्या है नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो जनरेट हो रही है ए बी सी पॉइंट से. बट ये ऑप्शन भी आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया. नाउ द थर्ड ऑप्शंस को देखने से पहले फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए. फोर्थ ऑप्शन कि ये जो आपके पास चार्जेस है वो कभी भी क्लोज लूप तो बनाती नहीं है. ये क्या बनाया हुआ क्लोज क्लोज सर्कल्स बनाया हुआ, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ये तो होती नहीं है इसकी फील्ड की डायरेक्शन ना. तो ये ऑप्शन आपके पास क्या होगी, डायरेक्टली रॉन्ग. नाउ द ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी हियर. सो यू कैन सी एंड चेक इट केयरफुली. ये आपके पास तीनों पॉइंट्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है. पॉजिटिव चार्जेस है तो वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, वो एक दूसरे को उससे क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे. तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जनरेट होगी वो आपस में मीट नहीं करेंगी और वो आपस से क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से रिपेल करके वहां से क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी. दैट मीन्स जो प्लस के हो ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करेगा. सिमिलरली पॉइंट बी एंड सिमिलरली पॉइंट सी. तीनों पॉइंट्स के ऊपर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जनरेट होगी. दैट मीन्स व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी हियर. दीज आर द 1 मार्क्स क्वेश्चंस बट these are important which is based on your characteristics or properties of electric field lines. Is it clear? जिसने वो सारी properties अच्छे से पढ़ी होंगी, जिसके mind में होगी what is the concept behind it, then you can easily choose the correct options from the here. Here draw कर लीजिए इसको फटाफट से. Yes, I will write the next number question here. That is third. Again, which is based on your electric field lines. Is that clear? Okay. Now you can see the next question. ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है. एक आपके पास Q1 चार्ज दिया हुआ है. थर्ड क्वेश्चन इज देयर. Firstly I will draw the diagram so that it is clear to all of you. I will write it here that is Q1 charge and here is Q2 charge. Clear? टू चार्जेस आपके पास दिए गए हैं एंड आपके पास जो है डायग्राम दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे उसको प्लेस किया गया है. एक एक्स एक्सिस पे उसको प्लेस किया. दिस इज द Q1 and this is your Q2 charge. Now the field is started from the Q1 and it should meet at a Q2. यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे Q2 हो रही है. क्लियर? ऐसे कुछ डायग्राम दिया गया है और फर्दर आपके पास क्या है कि यहाँ से Q2 आ रही है लाइक दिस और यहाँ से एंटर हो रही है और यहाँ से क्या हो रही है आपके पास स्प्रेड हो रही है आउटसाइड. क्लियर? ये फिगर बना लीजिए इसको आप. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक इट लाइक दिस. यस. अब यहाँ पे आपके पास फोर ऑप्शंस दी हुई है. फोर ऑप्शंस आपके पास क्या है, दैट इज Q1 इज ग्रेटर देन Q2. फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2. फर्स्ट ऑप्शन इज दिस. सेकेंड है आपके पास Q2 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1. क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ ये तो सेम ही ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे आप क्या लिखोगे Q1, here you will write a Q. क्योंकि फर्स्ट एंड ऑप्शन आपके पास सेकंड क्या आ रही है, सेम आ रही है. सो थर्ड ऑप्शन आपके पास गिवन है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन. एट अ फाइनाइट डिस्टेंस एट द लेफ्ट ऑफ Q1 is 0. At a
electric field at a finite distance को मैंने in short लिख दिया, that is the line and S at the left of Q1, that is at the left of Q1 is 0, here, and the fourth option is given here, that is at finite distance right of Q2 is 0. Electric field at a finite distance at the right of Q2 is 0. चलिए, start thinking about this and tell me the right answer from these options. Yes, first option given है Q1 is greater than Q2. Second option is Q1 is less than Q2. Third option is that is at a finite distance at the left hand side of the Q1 is 0 and electric field at the finite distance at the right hand side of the Q2 is 0. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डायग्राम को कंपेयर करेंगे. सो आपके डायग्राम में क्या गिवन है कि Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और Q2 पे एंड हो रही है. दैट मींस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू Q1 इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 इज अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसमें एंटर कर रही है और Q1 से वो क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है. एंड सेकंड थिंग्स, Q2 पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की हुई है. Q1 पे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है which is greater than as compared to Q2. That means जो आपके पास Q1 चार्ज है वो bigger charge है as compared to the Q2 charge because it generates a number of electric fields, larger number of electric field lines as compared to the Q2 charge. Is it clear? Count कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 electric field lines are there and here 1 2 3 4 5 and 6. 6 is there. That means 10 and 6. Which one is greater? Q1 is greater than Q2. That means इनमें से ऑप्शन कौन सी आ रही है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन आ रही. एंड सेकंड थिंग्स, इसमें दो ऑप्शंस आपके पास करेक्ट हो सकती हैं. क्वेश्चन आपके पास है वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. क्वेश्चन इज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कहां पे 0 होगी. नाउ द सेकंड थिंग इज देयर, यू नीड टू थिंक about your previous articles which you have done in your previous lecture. That is, if we are we having the different kind of the charges, so where the electric field is 0, at the center, on the left hand side or on the right hand side. I think I have already told to all of you that is कि electric field lines अगर तो वो similar charges के लिए आती है, that means both the charges are positive in nature या फिर both the charges are negative in nature. On that time the electric field at the center of the line is 0. तो दो चार्जेस के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, 0 होती है. बट इन दिस केस वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ द चार्जेस. वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव हियर. दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 आउटसाइड ऑफ द चार्ज. आउटसाइड ऑफ द चार्ज हियर you need to find out the exact or correct result. On the left hand side is electric field 0 or on the right hand side. But one more point is there which I have already told to you, that is near to the smaller charge the electric field is 0. Yes, याद है आप सभी को, remember it कि near the smaller charge आपके पास electric field क्या होगी, 0 होगी. So which one is the smaller charge, Q1 or Q2? That is Q2 because Q1 is greater as compared to the Q2. तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 किसके पास होगी, नियर टू द स्मॉलर चार्ज. Which one is smaller? That is the Q2 here. So from these option now which one is correct for the electric field is 0? That is the electric field at a finite distance at the right of Q2 is 0. Right hand side is this. Q2 के इस साइड में, इस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0 रहेगी. दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 इज आल्सो अ करेक्ट ऑप्शन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसकी ऑप्शंस नहीं दी होती हैं. 1 मार्क्स में डायरेक्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देन यू नीड टू फाइंड the exact answers by using your previous properties of the electric field lines. Clear to all of you? Okay, now the next and the last one question which is based
your electric field lines. ऐसे ही similar questions you should do it by yourself from your NCERT examples and from somewhere else which you are using for your reading purposes. So we will see the next question from here. That is the next number question is question number 4. So ये आपका आया था 1996 में क्वेश्चन है. इन 1996 में आपका क्वेश्चन आया था. ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है. So here the question is metallic solid sphere is placed in uniform electric field. कि metallic जो solid sphere है आपके पास, metallic solid sphere is placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई वेक्टर. कि आपके पास एक मेटालिक स्फीयर है, उसको क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है. सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होती है, जो इक्वली स्पेस्ड होती है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, एंड दे हैव अ सेम डायरेक्शंस. दैट मींस दीज काइंड ऑफ द फील्ड्स आर नोन एज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द non-uniform electric field. So I will remind to you again. ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर यही लाइंस ऐसे हो जाती हैं कुछ, तो ये आपके पास क्या बन जाती है, नॉन यूनिफॉर्म. या तो ये आपके पास क्या इक्वली स्पेस्ड है, इक्वल डिस्टेंस पे है, सेम डायरेक्शंस है, देन दिस फील्ड इज नोन एज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है. या सो वो डायग्राम आपके पास क्या है, यू शुड ड्रॉ इट. फर्स्टली one circle is given, yes, and 4 lines are given here. First line is, it is a straight line, yes, this is your first line, and second line is look like a ऐसे कुछ दी हुई है, this is your second line, and third is again a straight line, and fourth one is वो कुछ इस तरह से है, यहाँ से line गई and यहाँ से out. Yeah, this is your fourth. So आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज फोर्थ है लाइक दिस वन. या सो नाउ माय क्वेश्चन इज दिस कि आपके पास जो मेटालिक सॉलिड स्फीयर है, जो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी लाइन जो है वो करेक्टली इसमें से पास आउट हो रही है. तो यू कैन थिंक फर्स्टली कि हमें एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर दिया गया है, एंड वी आल्सो नो दैट कि इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, इफ यू हैव वन कंडक्टर, इफ आई एम आस्किंग इनसाइड ऑफ द कंडक्टर इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आपको एकदम से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इनसाइड ऑफ द कंडक्टर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहती है, जीरो. यस, कि इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि हमने अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फिजिक्स में पढ़ा है कि जो आपके पास कंडक्टर है उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, जीरो होती है. तो इन सभी में से इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, जीरो. किसकी आ रही है, फोर्थ लाइन. तो कोई भी अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है कि इनसाइड ऑफ कंडक्टर, बिकॉज मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर भी होते हैं, इनसाइड ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. जिसने ये कॉन्सेप्ट रीड करा वो तो फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट कर देगा. क्लियर. बट अगर किसी के माइंड में ये आ जाए कि हमने तो ये भी पढ़ा था कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस, क्योंकि ये भी पॉइंट मैंने लिखवाया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर आल्सो. ये ऑप्शन भी तो रीड करी थी आपने, क्या कि वो उसके परपेंडिकुलर होती है. अगर आप ये भी कॉन्सेप्ट लगाओगे तब भी आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. यहाँ से गई और यहाँ से आउट, और इस साइड में आपके पास क्या है, ये तो आपके पास क्या है, इस तरह से घूम के जाती नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे इसका 90 डिग्री एंगल तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे भी इसका 90 डिग्री एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौन सा सेंटर में से क्रॉस कर रही है. अगर वो एग्जैक्टली सेंटर में से क्रॉस करे तब आपके पास क्या बनता है, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. बट यहाँ पे सिर्फ क्या है, फोर्थ नंबर लाइन का आपके पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है. दैट मीन्स द फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट. और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेते हो कि इनसाइड ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देन अगेन द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको देख लीजिए 1 मिनट एंड नोट डाउन इट on your fear notebooks. Okay, now the next one is this, that is, now we will do the new concept. So अब हम read करेंगे what is the meaning of the electric
डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट हमने रीड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड सम स्मॉल क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यूज व्हिच इज बेस्ड ऑन योर, yes, which is based on your characteristics of the electric field line. Now the next concept is electric dipole, which is most important articles, or we can say that it is a concept which is most important, बहुत ही ज़्यादा important है। इसको भी अगर आप practical base ही अच्छे से समझोगे, understand करोगे, then it is easy to all of you। आप सभी के लिए बहुत easy है, because you are all are a sharp minded person, तो आप सभी को बहुत easily ही क्या हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक डायपोल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच इज इंपॉर्टेंट, क्या मार्क कर लीजिए। सो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, पहले इसका सिंबल होता है हम इलेक्ट्रिक डायपोल का, दैट इज पी के साथ इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल पी लिखा होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल टू चार्जेस के कॉम्बिनेशन से एक आपके पास क्या होता है, डायपोल। डायपोल का मीन्स टू पोल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। आप टू चार्जेस को कंबाइन कर रहे हो और आपके पास एक डायपोल क्रिएट हो रहा है, और उसी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलोगे, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। इज इट क्लियर द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल? So write down its definition, electric field due to a dipole, that means हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू अ डायपोल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने से पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, यस, दैट इज to the product of two equal and opposite charges and smaller the distance between them। इसका प्रोडक्ट होता है कि two equal and opposite charges separated by a small distance। डायपोल की बता रही हूँ, two equal and opposite charges which is separated by a small distance। Clear to all of you? Now I will draw one figure here from this definition, so I think it is clear to all of you कि मैंने यहाँ पे एक डायपोल बनाया having a positive charge and here is the negative charge। इक्वल मैग्नीट्यूड है उस चार्जेस का, बट वहां पे आपके पास क्या है कि वो ऑपोजिट इन नेचर के हैं, क्लियर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज very small distance we are taking, but in this case generally we are taking a distance like a r, but in this case for just to make a simple calculations we are taking it here like a center, this is your center point, suppose that this is o, and here the distance is l and this is your again l, that means the total distance become 2l, clear। तो हम क्या लेते हैं, इसको 2l लेते हैं। आप l की जगह r भी कंसीडर कर सकते हो, a भी कंसीडर कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस, एंड दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, प्लस q एंड माइनस q। सो दो चार्जेस के कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या बनता है, डायपोल बनता है। सो उसी डायपोल को आप इस तरह से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। क्लियर, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को ही p के साथ आप इसको डिनोट करते हो, क्लियर। सो p के साथ आप इसको डिनोट करते हो। ये सिर्फ आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल था। इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास क्या होता है, दैट इज टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, जिसको आपने स्मॉल डिस्टेंस के साथ क्या किया होता है, सेपरेट किया होता है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट इज द डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे ड्रॉ कर सकते हो, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। So डायपोल मोमेंट आपके पास क्या होता है, it is denoted by the p here and it is the product of the magnitude of the charges and the smaller the distance between them। That means कि आपके पास जो डायपोल मोमेंट है which is denoted by the p here which is the product of the charge and the distance between the two charges। तो आपके पास magnitude of the charge क्या है, q, 2l is the smaller distance between them, so you can write it like this, p is equal to q cross 2l, clear। So
डायपोल मूवमेंट इट इज द वेक्टर क्वांटिटी. क्या होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी. यस, वेक्टर क्वांटिटी मींस हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन. कि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज द वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? ओके. नाउ you can write it in a wording also. Product of magnitude of charge and magnitude of charge and the distance between the two charges and the distance between the two charges. अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है ऑफ 1 मार्क्स की एंड देन यू नीड टू राइट इट लाइक दिस कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हियर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग अ डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट. यस, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट. अब मैं डायपोल मूवमेंट को P सिंबल के साथ डिनोट करूंगी सो दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जो डायपोल मूवमेंट है उसको हम कौन से सिंबल के साथ डिनोट करते हैं? P, स्मॉल p. आई एम कंसीडरिंग हियर. अब जहां पे जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो जहां पे भी डायपोल मूवमेंट की बात होगी आई विल यूज द डायरेक्ट सिंबल P. क्लियर? सो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. क्या डायरेक्शन होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? तो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये इसकी डायरेक्शन है आपके पास डायपोल मूवमेंट की. याद रखना, ये 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन. और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है? दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपके पास डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. क्लियर? वो आपके पास क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. और आपके पास डायपोल मूवमेंट की क्या डायरेक्शन होती है? दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शंस. इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल मूवमेंट है दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट. क्लियर? ओके. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई विल राइट वन स्मॉल क्वेश्चन हियर सो दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल and how we can easily calculate in a small numericals or small examples. Okay, now you can see find the net electric dipole moment for the system. आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना. I will write the question here. Find आपको क्या करना है? That is the dipole moment for the system. Find net dipole moment for the system. Clear? आपको क्या करना है? नेट डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है फॉर द सिस्टम. हियर सिस्टम इज गिवन टू ऑल ऑफ यू. दैट इज यू शुड ड्रॉ इट लाइक दिस. आपके पास क्या एक फ्रेम दिया हुआ है x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलोंग और आपके पास क्या है? 2 चार्जेस यहाँ पे प्लेस्ड. यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया गया है प्लस q चार्ज और हेयर पॉइंट इज गिवन a 0 एंड हेयर इज अगेन प्लस q चार्ज. हेयर इज 0, a. आपको पता है ना कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे लिखते हो? फर्स्ट पॉइंट x का होता है, सेकंड पॉइंट y का होता है. इफ आई एम राइटिंग हियर a 0 दैट मींस a इज x एंड 0 इज y पॉइंट. y is 0, x is 0, y is a. And the origin here is minus q point. आपके पास क्या है? Placed है again the minus q here. Here you should draw this diagram first of all. Now you need to calculate the dipole moment. Now we also know that what is the symbol of dipole moment is p vector because it is a vector quantity and it is the product of the magnitude of the charge and the small distance between them. Yes, magnitude of the charge आपके पास क्या है? किसी भी डायरेक्शन को देखो, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है? q चार्ज आ रहा है. इस साइड को भी आपके पास क्या आ रहा है? q चार्ज आ रहा है. You should take it as a q. So what is the distance between these two charges? Here is again a and here is again a. Because this is the distance
from the y-axis and this is the distance from the x-axis. Then you should write it here, that is q cross a. A is the distance between the charges. Is it clear? तो ये आपके पास क्या हुआ, डायपोल मोमेंट, ये इसका फॉर्मूला हो गया. आप इसको मैग्नीट्यूड में भी ले सकते हो. क्लियर? मैग्नीट्यूड में लेना है, देन नो नीड टू मेक अ एरो. और नाउ वी नीड टू फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट. सो फॉर नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. सो नेट डायपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है. यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग्स. If you have two equal vectors, then how you can calculate the resultant between them? आप उसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ. If you have a two vectors, clear? Then आपके पास क्या आ रहा है, x और y. तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से होता है, फ्रॉम द सेंटर. कि रिजल्टेंट जो आएगा आपके पास, वो आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम द सेंटर. बिकॉज टू आपके पास क्या है, इक्वल वेक्टर्स दिए हुए हैं और उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, फ्रॉम इट्स सेंटर. इसको p का रिजल्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आपने डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. इस डायरेक्शन में भी आपके पास p है और इस डायरेक्शन में भी आपके पास क्या है, p. दिस इज योर ओरिजिन. नाउ p नेट, तो इसके डायगोनल से हम इसको रिप्रेजेंट करें. सो p डायगोनल को आप लिख कैसे सकते हो, p नेट. या सो ये जो आपके पास डायगोनल आ रहा है, देन यू शुड कैलकुलेट इट डायरेक्टली. दैट इज द यस t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. क्लियर? p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कर सकते हो, प्लस 2p स्क्वायर अगेन cos ऑफ 90. cos 90 आपके पास क्या होता है, 0 होता है. वो टर्म यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगी. देन यू शुड गेट द आंसर इज लाइक दिस. एंड आफ्टर सॉल्विंग इट्स स्क्वायर रूट यू विल गेट द आंसर p रूट 2 हियर. क्लियर? दिस इज योर p net. And now you need to put the value of the p from your first equations. Take it from here and put it here, and you will get its final result. So ये आपके पास क्या है, q a into root 2. This is your resultant dipole moment. Is it clear to all of you? Note down कर लीजिए इसको. Yes. Write it on your notebooks. You should make your notes. आप अपने नोट्स खुद से बनाइए, दैट मच बेटर. अदरवाइज आपके नोट्स जो वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो वो आपको हार्ड कॉपीज मिल जाएंगी. डोंट वरी अबाउट दिस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स. बिकॉज जो अपने नोट्स होते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है और वो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस, वी नीड टू फाइंड इट्स SI यूनिट. यस, SI यूनिट ऑफ dipole moment, which is denoted by the symbol of p. Is that clear? हमने क्या फाइंड आउट करना है, SI यूनिट. SI यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, p and its formula q into 2l. Clear? या फिर आप a भी लिख सकते हो. This is your choice. And we also know that कि जो चार्ज है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम. And its symbol is C. Clear? And 2l is the length between the two charges, which is simply denoted by the m. That is the meter, or in wording coulomb meter. Clear? इसको cm के साथ हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. Is it clear to all of you? Okay. I think it is clear to all. Now we will see the next concept. So which is based on this. So today we will see the small things from here. कि अब आपको क्या करना है, now you need to find out the electric field lines of the electric dipole. कि आपको electric field lines को calculate करना है on the electric dipole. अब dipole के ऊपर आपके पास क्या है, दो तरह के things जो arise होंगे. Clear? थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगी. Rest we will solve its calculations more or in the next lectures. So I will tell you small things. We are taking here the dipole, positive and negative charge. Two equal and opposite charges are there, and the small distance between them, that is the 2l here. ये आपके पास क्या है, electric dipole है. Now we need to calculate the electric field on it. Electric field on it, ये आपके पास क्या है, इसके two cases arise हो सकते हैं.
that is along the x-axis and second is along the y-axis. जो आपने x-axis के along कैलकुलेट करना है वो क्या आ जाएगा, that is the point is placed on the axial line. Yes, इस पे क्या आएगा, point is placed on the axial line which is the horizontal line parallel to the x-axis. जो आपने क्या एक पॉइंट प्लेस किया है जहां पे आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ द एक्सिस, और आपको क्या एक एक्सियल लाइन दी हुई है, एक्सियल लाइन के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करना है, डायपोल आपने कंसीडर किया है और एक्सियल लाइन के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो आपका पॉइंट है वो कहाँ पे प्लेस होगा, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस और ऑन द एक्स एक्सिस. इज इट क्लियर? फर्स्ट केस तो आपके पास एक्सियल लाइन का हो गया. सेकंड केस आपके पास क्या रहेगा, दैट इज पॉइंट इज प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. सेकेंड आपके पास क्या रहेगा, इक्वेटोरियल line. So what is the meaning of the equatorial line here? Equatorial line, that means the perpendicular line. Perpendicular line which is along your y-axis. Yes, it is along the y-axis. ये y-axis के along है और आपके पास क्या equatorial line जिसको बोलते हैं. यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट प्लेस किया जाएगा, उसी पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल. डायपोल में आपके पास क्या है, टू ऑपोजिट चार्जेस हैं और आपने क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है व्हेन द पॉइंट इज प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन को आप क्या बोल सकते हो, बाइसेक्टर पॉइंट भी बोल सकते हो, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल हियर. बाइसेक्टर मींस ये सेंटर में से जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन जो है क्रॉस करती है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So that's all for today. You can revise your whole topic up to this. That is the what is the meaning of the electric dipole moment, and some basic questions and small questions which is based on your electric field lines and its properties. So tomorrow we will do how we can calculate the electric field on the axial lines as well as on the equatorial line. Okay, thank you very much.